Namaskar, I Reed Chaudhary welcome you to the series Rise with Women presented by 40 Women Wing. Today we have with us a very dynamic lady, President 40 Women Wing, Ms. Neelam Mittal. She is the chairperson of CMA. She is into import and export also. She is an industrialist. नीलम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका राइज विथ विमेन के इस खास एपिसोड में. Thank you, Reed, for having me here. This is a golden opportunity to serve as an entrepreneur and a professional person in this forum. सी बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट भी आप हैं. हाल ही में 40 विमेन विंग की प्रेसिडेंट भी 3 साल के लिए आप नियुक्त की जा चुकी हैं और साथ ही इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी आप हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू नो अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर. It's a very good questions. Started my journey is in very deep rooted. I have been start my journey as a key learner. Because of that, I'm always passionate about the learning process. When I started my journey as an entrepreneurship, so I met lots of people, versatile sector. So learning process की वजह से we gain lots of knowledge and we explore myself not exactly domestic market, nationally and internationally also. So where we learned a lots of things. Lots of means not exactly in industrial things, export things also, and the versatile sectors. तो इस जर्नी के बारे में अगर कहूँ तो not exactly it's started only alone as an entrepreneur. My husband is a bigger supporter to me for this journey. That's why I'm here as an entrepreneur. Very nice. So how did you first get associated with 40? Okay, so it's a very long history. Year ago, I want to some association with the government. So I found a 40 organization. They are work with the government bodies and the private sector. When I am into in industries, so I found out 40. They have collaborations with some government policy in the private sector. So someone introduced me 40. Then I attended 40 meetings. So I found lots of opportunity as an entrepreneurs, as an industrial कि जहाँ पे मैं गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है उनको इनकल्टिकेट कर सकती हूँ, उनको एम्पावर करा के अपने लेबर्स को या अपने सराउंडिंग्स लोगों को उनको समझा सकती हूँ. आई फाउंड द वन प्लेटफॉर्म जिस पोर्टल के थ्रू जितने भी बजट या कोई भी एवरी ईयर चेंजेस हो रहे हैं गवर्नमेंट में, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट, सो उनके जो बेनिफिट्स थे आई डेफिनेटली कैच थ्रू टू 40. सो दैट्स व्हाई आई एम द बिकम अ पार्ट. It's the best for having a knowledge about the government policies and all that. Of course, yes. It is a link between the government and the private industrial persons. So every time that every year budget is come out. So बहुत सारी policies change होती हैं जिसमें छोटे छोटे implementations होते हैं और हम वही 5 साल पुरानी policies को चल रहे होते हैं. But I'm become a part of the 40. So उसके बाद वो चीजें मुझे हर साल aware करती है because I'm the part of the 40. So what does 40 mean to you personally and professionally? Okay, so personally, 40 means a family where every time they support me, guide me, mentoring me, they give me some opportunity to collaboration with something different platform in a personally matter. It's a family. Family means everything. And they professionally, 40 means they are empower your journey as a women. They are give this platform where you rise yourself in the internationally market. 40 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, नॉट एग्जैक्टली इन अ इंडस्ट्रियल और ट्रेड वे में. इंडस्ट्रियल को अपॉर्चुनिटी देती है इंटरनेशनली मार्केट में अपने आप को एक्सप्लोर करने की. सो प्रोफेशनली दे गाइड मी, they support me, they give me chance to collaboration, they uplifted me, and now at the post as a president of this, so I found the empower the women and step forward and shine the every female surrounding me. So एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि 40 में रहते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने हुए आपको इतना टाइम हो चुका है, तो किस तरह से आज तक आपको फायदा हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन से? बहुत सी ब्यूटीफुल सोल पर्सनालिटीज से मुलाकात हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला because I'm a passionate keen learner. I
always believe in the power of consistency. So I'm a corporate person. I'm always doing hard work in my profession. That's why I'm here. So when I am in 40, so I found versatile personality, the kind of father figure, kind of grandfather figure, kind of brother figure, kind of mentor figure. So lots of female I found in 40. In a professionally way, I gain lots of opportunity because I am where I am today just because of guidance of 40. So not exactly me, surrounding every women जो एसोसिएट है 40 से उन्हें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस 40 के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। हाँ, बहुत खूब। तो साथ ही क्या संदेश, क्या मैसेज आप सभी यंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगी? Oh, yes, it is enough. Okay, so I totally believe in a consistency of power. So when you are doing anything in your life, what do you want to get it? So you are doing consistency way. You believe in you ki what exactly you are, what exactly you give into society. You do not exactly yourself. आप अपनी family, अपने surroundings, अपनी society, जिन लोगों के लिए आप काम कर रही हैं उनके लिए हमेशा गिवर नेचर आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए। सेकेंडली, एवरी टाइम ऑफ लाइफ वी हैव सम गुड थिंग्स, चांस एंड चॉइसेस। सो जो चांस जब हमें मिलता है हम उसमें अपनी चॉइस डाल देते हैं। सो नेवर फॉरगेट दिस कि चांस बार बार नहीं आते हैं, चॉइसेस फिर भी लाइफ में हो सकती है। सो ग्रैब दिस चांस, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड होल सोल हार्टेड डूइंग वेरी हार्ड वर्क, क्योंकि when you are doing your hard work in a consistency way, in a keen learner way, you will definitely achieve what you want in your life. So it means one has to learn how to grab the opportunity. Absolutely, absolutely right. Because opportunities never come again and again in your life. When that is come in your life in a first time or last time, I don't know what, because chances never, never forget. कहते हैं ना कि हर अपॉर्चुनिटी दरवाजा एक बार खटखटाती है। इन अ सिंगल सेक्टर कि एक चीज की अपॉर्चुनिटी बार बार आपकी लाइफ में आएगी, देयर इज नो एनी चांस, बट एक बार अगर आ रही है तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके और आपके इतने खूबसूरत जवाबों को सुन के। Thank you so very much for being a part of this episode. I wholeheartedly thank you for being here with us. Thank you. Thank you so much, Reed, for asking me. This is a very wonderful question. I hope you find the exact solution through to my answers. Sure. Thank you so much, Reed. Thank you.